To speak of human rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human. Of course, we are not speaking here of human rights in the self-evident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human. Human rights have been identified as those rights which are important, moral, and universal. Human rights are sometimes called fundamental rights, or basic rights, or natural rights. As fundamental or basic rights, these are those rights which must not be taken away by my act of legislature or government, and which are after set out in the fundamental law of the land, that is, the Constitution. As natural rights, these are seen as belonging to men and women by their very nature. Another way to describe them would be to call them as common rights, for these are the rights which men and women in the world should share. Mu'ul Paira, passage in Hindi. मानवाधिकारों की बात करना वास्तव में ये समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ हम मानवाधिकारों की स्पष्ट परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं कि जो भी मानव हैं उन्हें मानवाधिकार मिलते ही हैं, बल्कि इस दृष्टिकोण की करका है कि केवल मानव होने के कारण ही व्यक्ति इन अधिकारों का अधिकारी होता है। मानवाधिकारों को अंशपूर्ण, नैतिक और सार्वभौमिक अधिकार माना गया है। इन्हें कभी कभी मौलिक अधिकार, मूलाधिकार या प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक या मूलाधिकार इस अर्थ में हैं कि इन्हें तो किसी विधानमंडल द्वारा और ही सरकार द्वारा छीना जा सकता है और इन्हें देश के मौलिक विधि अर्थात संविधान में निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक अधिकार इस दृष्टि से माने जाते हैं कि वे मनुष्य और स्त्री को उनकी जन्मजात प्रकृति के आधार पर प्राप्त होते हैं। इन्हें सामान्य अधिकार भी कहा जा सकता है क्योंकि ये वे अधिकार हैं जिन्हें संसार के सभी पुरुष और स्त्रियां साझा करते हैं। Precis Writing title: Human Rights, the Inherent Rights of Humanity. Persistent human rights are those rights which a person possesses merely by being human. They are regarded as important, moral, and universal. Often termed as fundamental, basic, or natural rights, they cannot be taken away by any legislature or government. As fundamental rights, they are guaranteed by the Constitution. As natural rights, they belong to men and women by their very nature. Thus, human rights are the common rights shared by all people across the world. Precis in Hindi. शीर्षक: मानवाधिकार। मानवता के जन्मजात अधिकार। प्रेसी मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये नैतिक, मुस्तफपूर्ण और सार्वभौमिक हैं। इन्हें मौलिक, प्राकृतिक या सामान्य अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और इन्हें कोई सरकार या विधानमंडल नहीं छीन सकता। प्राकृतिक अधिकार जन्म से है स्त्री और पुरुष दोनों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मानवाधिकार भी मनुष्यों के साझा अधिकार हैं। धन्यवाद।